Kartik, and we are happy to announce that Kartik is the new face of PETA, and he is the Thank you. goodwill ambassador for PETA's vegetarian pro-vegetarian campaign. And Kartik, I would like to ask a few सॉरी questions वो to you. मैंने जेब में रख दी थी Oh God. अटक रही थी हाँ Yes. हाँ So Kartik, tell us about this campaign, about PETA's campaign. I'm really glad yeah, that I got this opportunity to be with associated with PETA. I mean it just took one video me to change from a non-vegetarian to a vegetarian. The kind of I'd seen some video where how the animals were slaughtered, how they were taken from one place to the other, and in a cramped up situation, how fishes were mutilated when they couldn't breathe. So ये जो सारी चीज़ें हैं ये देख के मैं मतलब because I am an animal lover, तो मैं मतलब easiest thing for me was to turn into a vegetarian. तो वो चीज़ मैं मतलब किया उस वीडियो को देखने के बाद and I'm glad that PETA is actually doing things which are associated with animal welfare and yeah I'm really glad that we did this. Great. You're right. There are videos out there on the internet which will tell you exactly what happens to animals used in the food industry. Karthik, tell us how do you happen to be so fit? What do you do for your fitness? आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है कि टू बी फिट यू नीड टू बी अ नॉन वेजिटेरियन. ये एक मिथ मेरा बहुत शुरू में ही क्लियर हो गया था एंड in fact being a vegetarian you have quite a few health benefits. I mean it reverses quite a few diseases, you know, जैसे heart strokes या cancer या diabetic लोगों के लिए being a vegetarian it helps you. There are studies जो ये बताती हैं and fitness के लिए I mean ये बहुत बड़ा myth be a vegetarian, a non-vegetarian, because vegetarian food में इतना सारा प्रोटीन आपको ऑलरेडी मिलता है, प्लांट बेस्ड डाइट में इतना प्रोटीन जो हाँ जो जो आपको आराम से बीइंग अ वेजिटेरियन मिल सकता है. सो इसे मतलब उसमें कोई राज नहीं है, आप चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो आपको प्रोटीन मिलता ही है. Right, right, right. And if you would like to give a message to your fans and people over here to how to be fit, what to do, what kind of a diet one needs to follow to be fit. I think it's all about eating right rather than being a vegetarian or a non-vegetarian, and at least working out once a day. You know, at least an hour a day. So that is what I follow, and that is what I can suggest. And if it's something you could do for animals, is the easiest thing would be to be a vegetarian. So if you love animals, don't eat them. And now the floor is open for questions. Due to time constraints, we are taking very few questions. Ji ma'am. Mike. Hi, this is Sakshi from Bollywood now. Hi Sakshi. Yeah, I would like to ask that, looking good in your industry is very important. Ji. So sometimes, I mean, on most days you guys use makeup or have to wear leather jackets or shoes. Ji. As a vegetarian and as a person who loves animals, what do you do about that? Because, there will be days where you are asked to wear leather jackets or leather shoes or use makeup that has carmines or animal fat. So what do you do about that? I'm really looking into it also. I mean, it's something which good question again. So there are certain kind of leather, yellow leather, which is PU. So PU leather, which is a different thing altogether, and that is something I'll look into in the future. I mean, there are aspects, there are things which you cannot avoid being an actor a lot of times, and it's not in our hands. So that is something which I'm really trying hard to be a part of. Thank you. Yeah. Hi, I'm Chriselle and I'm from Youth Incorporated. You're recording also while Yeah. asking a question. Yeah. Yes. Uh, Okay. So my question to you is, being a youth icon, what is your message to the youth, and how would you encourage them to take up plant-based eating, especially the youth? uh, I would only suggest that, see, being a youth icon, I don't know how to suggest that thing, but all I can say is because uh, I really am an animal lover and an ardent animal lover. I
can't see them, being slaughtered the way they are, uh, the way they are taken from one place to the other, which is very cruel, and so animal cruelty is something which I am against, and we do that a lot of times in our meat industry and food industry. So I think that is something I can only suggest and ask my fans or the youngsters. Maybe if you just are an animal lover, so don't eat those animals. Yeah, thank you. या माइक एक ही है, दो ही छुपा के क्यों रखे सचिन? हाँ हाय कार्तिक, दीपक या हाय कार्तिक, जैसे कि आप वेजिटेरियन को प्रेफर करते हैं, जी तो सर। ऐसा कोई टाइम मतलब दोस्तों के साथ आप हैंग आउट करते हैं, तो कुछ उसमें हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना नॉन वेज, वो हमारी फिरकी लेना शुरू हो जाते हैं, अरे यार वेजिटेरियन अरे बहुत बार मेरी हर दिन फिरकी लेते हैं सब, हर दिन कितना बोरिंग है यार, तू वेजिटेरियन है। या ओके, तो हाँ, या प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू। तो हाँ, उससे कुछ मतलब नहीं होता यार, मतलब कई बार ऐसे दोस्त फ्रेंड्स होते हैं कि टेबल पे सब लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, आप वेजिटेरियन होते हैं, तो हमेशा से वो चीज़ रिलेट की जाती है कि यार वेजिटेरियन क्यों है यार, तू मतलब लाइफ नहीं जी रहा है अपनी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार सवाल आता है, बट आई एम यूज्ड टू इट नाउ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मेरी कंपनी उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। साल 2019 शुरुआत हो चुकी है जी एंड सर। आपकी फिल्म लुका छुपी भी आ रही है 2000 मार्च में आ रही है। साथ ही ये भी है कि आप इम्तियाज अली के साथ भी यानी लव आजकल पार्ट 2 पे भी काम करने वाले हैं एंड सारा अली खान के साथ, क्या कुछ है उस पर कुछ बताएंगे? एंड बिकॉज लक्स गोल्ड अवार्ड में हमने आपसे पूछा था, तो लाइक कॉफी डेट के लिए बात हुई थी, जी जी तो उस पर आपने कहा ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर द कॉफी डेट। जी। सो व्हाट्स द प्लान नाउ फॉर द मूवी? तो लव आजकल का पूछ रहे हैं या कॉफी लव डेट का? आजकल 2 का, उसके साथ साथ कॉफी बता दीजिए। सर ये तो आई थिंक इम्तियाज सर से आप पूछेंगे तो बेटर रहेगा अबाउट लव आजकल, या जो फिल्म वो प्लान कर रहे हैं। जब तक पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं आता है हर चीज़ से, तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकता। कॉफ़ी डेट के ऊपर ऑफ कोर्स, मतलब लास्ट टाइम मैंने जो सुना था, सारा ने बोला था, मम्मी ने उनको बोला कि अभी रुक जाओ, अभी बहुत बार बोल दिया है, तो अब कार्तिक का रिएक्शन आने दो, उनने बोला था। सो मैं बस वही बोल सकता हूँ कि मैं तो कॉफी डेट के लिए तैयार हूँ, उनको बस जगह बतानी है। Thank you. मेनू का वेट कर रहे हैं बस। Last आप question. भी वेट कर रहे हैं? Last मैं तो question. आपका ही वेट कर रहा था। थैंक यू। थैंक यू दीपक। हाय कार्तिक। हाय या अच्छा हाय। सो कार्तिक, आज ऐसी कंडीशन है इंडिया में कि एग्रीकल्चर बहुत ही कम हो गया है जी, जी। इस तरह, तो मोस्ट ऑफ जो है नॉन वेजिटेरियन की तरफ रुख मोड़ लेते हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर कम हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, एग्रीकल्चर की तरफ आपका रुख बदल रहा है, कम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। आई थिंक हमारी मैं उसके लिए यही एक चीज़ बोल पाऊंगा कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, और इंडिया मतलब एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, मैन पावर के लिए जाना जाता है। आई थिंक दैट इज़ वन बिगेस्ट एस्पेक्ट एंड बिगेस्ट एक वो होता है ना, पावर दैट वी हैव, विच इज़ द मैन पावर। एंड उसके लिए मतलब यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब हमारे पास ये चीज़ है, तो हम उसको और ज़्यादा यूटिलाइज करें, उस चीज़ में और ज़्यादा घुसें, एंड उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़ें। तो कार्तिक, साथ ही साथ आप बॉलीवुड का हिस्सा है, बॉलीवुड एक फैमिली की तरह है, जी तो मी टू पे काफी लोग खुलकर आगे आ रहे हैं, जी। बाहर निकल रहे हैं। जी। आपका क्या टेक होता है कि आप जिस तरह देखा जाए बॉलीवुड एक फैमिली है, तो आपकी फैमिली में इस तरह के जब हालात आते हैं, जिस तरह राजकुमार हिरानी पे अब रिसेंटली, जी। उस पे आपका क्या थॉट? Can we please keep the questions जी to मैं Peter's campaign? बोल देता हूँ, मैं Okay. बस इतना बोल सकता हूँ कि सर मतलब हम सब फैंस रहे इनके, एंड ये जो भी ये सिचुएशन आ रही है, जब तक ये आई थिंक एक लीगल तरीके से प्रूव होती है, तब तक हम कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। लाइक कि आप भी और मैं भी जानते नहीं उस बारे में कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ वे, और एक लीगल ऑप्शन जो अच्छे तरीके से उसमें प्रूव किया जा सके। आई थिंक दैट इज समथिंग, तब आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट कर सकता हूँ। बट इट्स सैड कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ये इंडस्ट्री या कहीं और भी दूसरी इंडस्ट्री में भी, आई थिंक आई एम टोटली अगेंस्ट इट। थैंक यू सो मच कार्तिक। Done. थैंक यू। Thank you. Thank you so much, everyone.
Thank you, We're done. Sachin. Thank you, Kartik. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you. AC नहीं चला है आज. अच्छा कम